time since I last made a video, but just so you know, I was stuck up in some stuff. So yeah, but yeah, I experimented something. You say new, not new, but experimented something, and I'm here to show you the results. Actually, what I experimented this time is mushrooms. Yes, you heard me right. This is mushrooms. So I experimented them. I tried to cultivate them in my home, at my home. And so, there are the results. I'm sorry the lighting is not very good in here, but yeah. Just this is the results. I actually cultivated mushrooms at my home. So today I'm going to show you oyster mushroom. That is also known as dingri. Dingri mushroom कहते हैं इन्हें. So this is somehow like this. As you can see, these are the branches. This is the root, and these are the branches, and these are the mushrooms. So this is a whole bag of mushrooms, and you can see many mushrooms coming out from like from the root. So these are basically grown in branches. This is a branchy system type of mushroom. As you know, mushroom is a fungus, is a kind of fungus, and it's come from the kingdom fungi. So the idea of cultivating mushroom was actually given by my mother. So she told me that mushrooms are also like a thing that we can cultivate, a kind of vegetable we can cultivate. So I was like, yeah, it is. And then she said, why don't we cultivate it? So yeah, so I took a 10 days training program from RCT Haldwani, and I mean it was conducted by RCT Haldwani, but that was conducted at our home. So me along with, I guess, 20 to 30 people took that 10 days training for mushroom cultivation, and then we did experiments, and I did experiment too, and here are the results, the positive results. Actually, I was not actually hoping this. I was thinking that maybe the first trial something might go wrong, but no, it was great. And today I'm here after a span of around 30 days, 35 days, to actually cut them. Today I'm gonna make mushroom at dinner for dinner. So yeah, so where I was, yeah, so I took a 10 days training program for mushroom cultivation, and it turned out good. I learned many new things, as I didn't actually knew that thing. And I also experimented button mushroom, but that's the process is not over yet. The mycelium means it's a kind of network. A network of what? फंगस. फंगस का एक नेटवर्क होता है जो कि आपका जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे उसको ग्रो कर रहे हैं उस पर वो फैलने लग जाएगा. सो द ऑयस्टर मशरूम इज बेसिकली ग्रोन इन राइस हस्क, जो धान का हम भूसा बोलते हैं, उसमें लगाया जाता है. सो यू हैव टू डू इज दैट आई टेल यू द प्रोसेस टू, बट first I will just cut these mushrooms off, if you don't mind. Yeah, so where I was, yeah. So we have to cultivate them. There are different means for different kind of mushrooms. You don't have to be, you have to study a lot about mushrooms before actually cultivating them. The cutting process is actually a little bit delicate. So this is how my mushroom is actually. I don't know if you can see it or not. Lightning is, there's no light actually in here. So maybe now you can see, I guess. Yeah, this is how a oyster mushroom is. It is also called shell mushroom, like जो सीप होता है जिसमें मोती मिलते हैं actually. ये वो भी कहा जाता है because इसका shape जो होता है वो ये देखिए round like a shell, and yeah. So this is it. This is the mushroom I cultivated, and I guess it's gonna be a handy thing that will come to handy uses. As you know, mushroom is actually very good source of protein. If you are if you are a vegetarian who doesn't like have meat and stuff, eggs or something, you can go to mushrooms. Mushrooms are a good handy thing to complete your protein requirements. You can have paneer too, but mushroom is must. Mushroom is must, because some people are lactose intolerant, or they have dairy intolerance. So yeah, mushroom is a good option for you all. The thing you have to do is you have to cultivate them very
it's a very patience, time taking process. So you should be very patient about cultivating mushrooms actually. But another benefit of mushroom farming is that you don't have to put too much hard work into it. इसमें ज़्यादा मतलब इतनी मेहनत नहीं लगती. So normally आप लोग खेतों में काम करते हैं, like all that sowing and frequent wateration of the plants, frequent weeds को remove करना and stuff. This is not how it is done in here. So it's a good process if you are lazy, but not lazy actually, but yeah, if you're lazy, then you can have this one as in here. So I took this training from RCT Halwani. The instructors were so good, they were so polite and humble, so they taught us very gently. So yeah, the button mushroom is still on the process. I will update that mushroom to you if something like that will happen. If I will get button mushrooms soon, then I will tell you. You can also see, if I don't know if you can see or not, but yeah, there is a kind of layer at the back side of the mushroom. Many kind of layers. I'll show you once I'll be in proper lighting. So yeah, my mom was actually freaking out. She was like, is it consumable or not? Because first when I noticed the pinhead growing, I mean the pinhead means the starting of mushrooms. So they were a kind of brown, like of brown or grayish type something on their head. So my mom was freaking out, like they might be poisoned or they might not be, like they might be toxic or something like that. But then I contacted to one of my my mom, the one who also taught me about mushrooms, and she told me that no, oyster mushrooms are that way. At first you will notice some kind of brownish or grayish layer on their head, but with time, when they will be growing in their part, and when they'll be fully grown, they will be all clean. So yeah, these are all clean, not basic white but off white, but yeah, they are clean and they are actually consumable. So I'm gonna make mushrooms tonight for dinner. Fun fact is that I don't like mushrooms. I don't like mushrooms. I'm not a very big fan of mushrooms. Actually, I don't like their taste. So these mushrooms are basically for my brother and my father. As my mother do like mushrooms, but she is actually not well nowadays. She got jaundice and stuff. And I told her that she can have boiled mushroom, but she's like, no, they're gonna taste so bland. And I'm like, okay. So she will have it after she'll be, all good. And for me, let's see what I will have for dinner tonight. But this is for my brother and my father. My brother actually loves mushrooms. He is a very foodie person. You can give anything to him and he'll be like, yes, yes, yes. He is a foodie person. I'm not a foodie person. I'm a picky person. I don't eat a lot of, food. Not every kind of food. My mom's is always bricking me about, she's always, like scolding me about these things, that I should eat this, I should eat that. And I'm like, mom, no. So yeah. Like whose mother is not like that? Everyone's mother is like that, The kids can relate to me, but the parents can't, I guess. So about the process of mushrooms, it is grown, as I said to you, it is grown in kind of husk. Different types of mushrooms are grown in different types of uh, bases. So this one, the oyster one, is basically grown in rice husk. धान का जो भूसा होता है, पुआल कहते हैं जिसे. So the process starts with, you have to actually soak the husk in the water with some antitoxins like formalin. You have to add formalin into that, and I am forgetting the quantity, but I guess it's around 125 ml in 200 liter of water, something like that. Yeah. So that's for toxins. If there might be any toxins in the husk, they will be killed immediately. So you have to soak the husk for around 6 to 12 hours, minimum 6, maximum 12 or 18 you can do. Then you have to sprawl that husk on a good floor, a good
dry and clean soil. And then you have to do what? You have to do wait for it to be dry, not that much dry, there should be moisture, but when you will hold it, like you will fist the husk, there won't be any water dropping down. So then that means the husk is fine. Then you have to do is the spawn means the seed. The seed of mushrooms are basically fermented wheat. It is made in laboratories. I guess people also made that spawn at home, but basically it is made in laboratory, and it's kind of fermented, wheat grain. Then you have to do is, there are two types of ways to sow this mushroom. The first is the harela process, the one layer of husk, spawn, then husk, then spawn, then husk. One is the sprinkling process. You just randomly sprinkle the spawns over the husk, then you mix it, and then you fill it in the poly bags. You have to fill them in poly bags around 12 into 18, something like that, and then you have to tie them up very good, so that there won't be any kind of gap in like the husk and the poly bag. There should be and then you have to take a fork or any kind of pointed object, and then you have to put some holes around the bags, like 20 to 30 holes around the bags. And then you have to do is all, find a good room that will be clean, sanitized, without any pests, and just hang that bag there. So you just basically hang the bags over it, because oyster mushroom जो होता है वो साइड से आता है legs के, like they are a branching system as I told you. So they are not like normal plants जो ऐसे upon to the head आते हो मड के ऊपर से, तो ये आते हैं साइड से, तो आपको नहीं टांग देना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि मशरूम्स नीचे से भी आ जाते हैं बैग्स के, तो अगर आप उसे ज़मीन पर रखेंगे तो आपके मशरूम्स जो नीचे आने वाले थे वो नहीं आएंगे, तो आपको लॉस हो जाएगा थोड़ा बहुत मशरूम्स में, मतलब प्रोडक्शन में. देन अगेन आपने इसे टांग देना है. द बैग्स विल बी हैंग्ड अबव like with the use of a wire or something. So then you will hang them up, and then you will leave it for 15 days, at least 15 days. After 15 days you will notice that there is a kind of white layer. As I can show you a bag, you can see the bag has turned white. All these areas have been white. ये वाइट ऐसा था नहीं, इसके अंदर जो अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो हस्क दिखेगा कहीं कहीं पर, बट बाकी ये वाइट दिख रहा है. ये वाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें माइसीलियम है. दिस इज़ नॉट समथिंग जो बैग में पहले से हो, इसमें माइसीलियम है. माइसीलियम जिसमें आपको बताया नेटवर्क ऑफ फंगस होता है. फंगस का नेटवर्क जैसे ही फैलने लग जाता है तो समझ आइए कि आपका प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो गया मशरूम का. देन आपको कुछ टाइम के बाद इसमें पिनहेड्स आने शुरू होंगे. जैसे देखिए मैंने बोला था कि बैग के नीचे से भी पिनहेड्स आते हैं, तो ये देखिए, हाँ ये दिखने में थोड़े ब्राउन लग रहे हैं. पहले मुझे भी लगा था कि कहीं कुछ ख़राब ना हो, बट नो, दिस इज़ नॉट दिस इज़ कंज्यूमेबल. जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये वाइट हो जाएंगे अपना. तो ये बैग्स का निचला हिस्सा जहाँ पे मशरूम्स आना शुरू हो गए मेरे. तो ये काफ़ी सारे पिन हेड्स आ गए हैं इस वाले बैग पे भी. कि देखिए इस वाले बैग पे बहुत अच्छा पिन हेड आया है. दीज आर द काइंड ऑफ बंच. ये देखिए पूरी कॉलोनीज आई हुई हैं, गैलरीज टाइप की, है ना. सो या दिस इज़ हाउ यू विल नोटिस कि पिन हेड आने शुरू हो गए. देन आपको कुछ नहीं करना, आपने चेक करना है इफ़ द बैग इज़ वेल मॉइस्चर्ड. अगर बहुत मॉइस्चर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें स्प्रिंकल कर लीजिए अपर लेयर पे. एंड देन आप कुछ लोग क्या करते हैं कि बैग्स हटा देते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास होल्स इनफ नहीं पड़ रहे हैं बाहर आने के लिए मशरूम्स के, आप बैग को हटा लीजिए. मैंने एक मशरूम में से जो मैंने आपको दिखाया उसका बैग मैं हटा चुकी हूँ. बाकी सब में अभी पॉली बैग्स लगे हुए हैं क्योंकि इसमें होल्स किए हुए थे मैंने फ्रीक्वेंटली. तो वही है, अब इसमें मशरूम्स हेड आने शुरू हो गए हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये प्रोडक्शन जो करना होगा शुरू हो जाएगा. एक बैग में लगभग 2 बैचेस आते हैं. पहला बैचेस में थोड़ा ज़्यादा मशरूम होगा, सेकेंड वाले में थोड़ा कम मशरूम होगा उससे, बट होगा. तो जब ये पूरे अच्छे तरीके से आ जाते हैं तो ये ऐसे आपको दिख सकता है. ये सारी कॉलोनीज जो छोटे वाले पिन हेड्स थे वो इतने बड़े हो गए हैं, और ये कंज्यूमेबल है. आप इन्हें खा सकते हैं आराम से. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे और मशरूम्स आ रहे हैं, इधर पे भी आ रहे हैं. तो यही चीज़ है, कॉलोनीज़ में आते हैं और एक के बाद एक आते हैं. तो आपको क्या करना है, ज़्यादा देर इन्हें रखना भी नहीं, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े हो गए तो इनका टेस्ट जो होगा थोड़ा ब्लैंड हो जाता है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा आपको. तो एवरेज साइज़ हो आपके पाम के बराबर, ये जो आपका पाम वाला हिस्सा होता है बीच वाला, इसके बराबर हो, आप उससे कट कर लीजिए. और कटिंग के भी इसके मैथड्स होते हैं. यू कैन कट देम ऑफ जस्ट लाइक दैट. इधर आप उसको ट्विस्ट कर लीजिए, उसकी स्टेम को पकड़िए और ट्विस्ट कर दीजिए, या फिर आप उसे क्या करिए शार्प नाइफ से कट कर लीजिए. तो हाल फिलहाल मैंने आपको इतना दिखा दिया कि मैंने ये कैसा बनाया हुआ है. एक मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ, मेरा कैमरा एक्चुअली फ्लिप नहीं हो रहा है, तो ये मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ, एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ अंदर ले जा करके लाइटिंग में प्रॉपर कि मशरूम कैसा आया है मेरा.
now it's proper lighting, so you can see the mushrooms actually. So this is the average size. I guess ये मेरी पाम से थोड़ा बड़ा है, बट मुझे काटने में थोड़ी देर रुकी थी, तो या। एंड जो मैं आपको बोल रही थी कि पीछे से इसमें लेयरिंग्स होती हैं, ये देखिए, ये लेयर्स होती हैं। तो ओएस्टर मशरूम्स जो होता है वो बटन के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगर आप इसे बाहर मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, चांसेस है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ओएस्टर मशरूम्स को ओपनली मार्केट में सेल नहीं करते, या फिर इसका कल्टिवेशन जो है वो थोड़ा कम होता है। बटन मशरूम्स मेरे ख्याल से आप सभी ने खाए होंगे, द वाइट वन, जो छोटे से बटन टाइप होते हैं, पैकेट में आते हैं। सो या मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया एंड सक्सेसफुल हो गया। मुझे जबकि लगा नहीं था कि होगा, मुझे लगा था कि फर्स्ट ट्राई है, मे बी समथिंग कुछ हो जाए गड़बड़ मुझसे, बट नो, दो फर्स्ट मेरा ट्रायल था, उसका प्रोडक्शन अच्छा आया है। एंड बटन मशरूम के लिए मैं आपको अपडेट करूँगी इफ़ एनी चांसेस विल बी देयर, तो मुझे थोड़ी ग्रोथ दिखेगी इसमें। सो मेन थिंग इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत मशरूम्स के बारे में तो बताया ही, बट इससे एक बहुत अच्छा आपको, जो मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो का, वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आजकल हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, दैट्स द रियलिटी ऑफ टुडेज जनरेशन की। आप कितनी ही अच्छी डिग्री होल्डर है, आप कितनी ज़्यादा अच्छे वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट रह चुके हैं, पर जॉब्स आर समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। So what you have to depend upon is self-employment. So this is a very good way of self-employment. Even though I'm studying, I'm still a student, I'm studying, but साइड बिजनेस कह सकते हैं, वैसे हो सकता है अच्छा खासा। ये मैंने फर्स्ट टाइम अभी ट्राई किया है, पर ये तो मेरा खुद का अपने कंज्यूमशन के लिए है। बट इसका आगे हो सकता है मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ, इसका एक अच्छा स्टार्टअप हो सके, क्योंकि मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। और सब्जियाँ क्या हैं कि आपको मिल जाएंगी, हर दूसरा तीसरा आदमी लगाता है सब्जियाँ, बट मशरूम इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट ईजिली टू फाइंड इन द मार्केट। सो इसकी एक अच्छी मुझे मार्केट पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि मैं इसे ग्रो करूँ और मुझे फिर इसकी अच्छी मार्केट अब प्रोवाइड हो जाए वहाँ पर। तो मेन थिंग इज़, द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई ऐसा ऑक्यूपेशन ढूंढना पड़ेगा जिससे आप खुद के लिए एक मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, ताकि आपकी खुद की थोड़ी बहुत इनकम हो और खुद का भी आपका थोड़ा बहुत जो साइड बिजनेस है, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। बेसिकली मैंने पिछले साल ड्रॉप लिया था, तो मैं पिछले साल घर ही थी, तो उसके साथ साथ ही मेरा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। मे बी अगर मैं यूनिवर्सिटी में होती तो मैं मे बी ये सब चीज़ें नहीं कर रही होती, क्योंकि डेस्टिनी, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। सो मेरे 1 ईयर के ब्रेक में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया एंड ये हो गया। एंड आई गेस आगे भी अब मैं इसे करूँगी, मैं इसके स्पॉन्स वगैरह के लिए बात करूँगी, पूछूँगी कहाँ से मुझे अवेलेबल हो सकते हैं, और जो मैंने ट्रेनिंग ली उसका मैं अच्छा यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो यही चीज़ है, इवन इफ़ यू आर लर्निंग, द मेन मोटिव ऑफ लर्निंग इज़ टू एक्सपेरिमेंट, टू एक्सप्लोर, टू एक्चुअली टेक दैट लर्निंग इनटू अ प्रैक्टिकल वे। सीख करके कुछ नहीं होगा, आप कितनी बुक्स पढ़ लीजिए, कितना ही आप नॉलेज अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए, दैट विल नॉट बी हेल्पफुल जब तक आप उसे प्रैक्टिकल ना करें। तो यही मेरा वीडियो का मोटिव है थोड़ा बहुत, एंड मुझे अच्छा लगा आपके साथ ये चीज़ शेयर करने में। एंड होपफुली अब मैं आगे, आज से आगे को काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाती रहूँगी, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस, डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, एंड आई होप आप लोग मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत कमेंट करेंगे, अपने थॉट्स रखेंगे यहाँ पे मेरे सामने, एंड मेरे थॉट्स आपको कैसे लगे वो भी आप मुझे बताइए, थोड़ा बहुत फीडबैक, क्योंकि आप सब मेरे बड़े हैं, यू आर माय एल्डर्स, सो इट विल बी गुड इफ़ यू विल एक्चुअली गिव मी काइंड ऑफ फीडबैक और सजेशंस। आई लव टू रीड देम। मेरी पिछली की 2 वीडियोस में आपने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली पढ़ के, मॉम के फेसबुक प्रोफाइल पे। तो थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू ऑल गेव मी, एंड आई होप कि आप मुझे देंगे आगे भी। एंड I am also thinking about having a YouTube channel, so please drop your opinion about that thinking, and that's it. मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए everyone take care, as the weather is actually not very suitable nowadays, so please take care and bye bye.